Good evening, candidates. Good evening. Good evening. Yeah. Good evening. This is regarding IBPS RRB PO इंटरव्यू. अभी पता नहीं कब आपको रिजल्ट आएगा. मेरा ख्याल से जल्दी आने वाला है. जब आपको ये इंटरव्यू आ जाएगा तब आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये बोलने के लिए तो अभी हम आएंगे. इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, आप जब इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्शन हो गया, आप तो प्रिपरेशन अच्छा से करवाना है. जिसको आपको मटेरियल्स, जब आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करेगा, मटेरियल्स दे देगा आपको. वो मटेरियल्स आप पढ़ने के बाद में आप तैयार होने से, नहीं तो आप अंग्रेजी में आंसर कर सकते हैं, नहीं होने से तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं. Like that, people appearing for interview, say in Karnataka or Andhra, they can always talk in their local language. So be ready for answering questions relating to your native place. माना what is your native place? आप क्या बोलेंगे, आपने एप्लीकेशन में क्या लिखा है उसका बारे में, आप नेटिव प्लेस का बारे में आप पूरा अंडरस्टैंड करवाना है. मतलब आपको विकिपीडिया से लर्न कर सकते हैं, नहीं होने से तो आपको देश में रहने वाला उनसे भी पूछ के नोट कर सकते हैं, नहीं होने से तो आपको स्टेट का कुछ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस कुछ होगा तो उसको देख के भी आप पढ़ सकते हैं. What I am telling you is that you can prepare based on, say, the Wikipedia or say the current general knowledge book relating to your state, and also you can talk to others from your own native place to know about that native place. Important thing they ask is that who are the important people now living in that place, and what are the important places in your district. And supposing you talk about the state, then how many districts are there? How many districts are there? Who is your chief minister? आपका स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है जी? आपका स्टेट का गवर्नर कौन? और इसका अलावा इंपॉर्टेंट स्टेट मिनिस्टर्स का नाम भी पता होना है. मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, फिनांस मिनिस्टर कौन है, जैसे में भी कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है. ये सब सीखना, लर्न करना. हम तो आपको बोल नहीं सकते बिकॉज इंडिया में तो बहुत स्टेट्स है, सबका डिटेल्स तो मेरे पास नहीं होगा. आप लोग अपना स्टेट का बारे में, आपको डिस्ट्रिक्ट का बारे में, आपको नेटिव प्लेस का बारे में सीखना है, प्रिपेयर करना है. So you have to prepare about your native place, native state, then native district, all details. What are the crops grown? What are the other businesses done in your place? Manufacturing. What for your place is famous? For example, some place in which place, I don't know, Uttarakhand or so, or Jharkhand, I don't know. Some type of artwork is famous. And in some place like Varanasi, Kanchipuram, then they are known for silk. So likewise, you must be in a position to know about your native place and what is the business of the people. And also you can know which are the, for example, Ludhiana, I think it is famous for what? Ludhiana, I think it is famous for some hosiery goods and also for
that one. Similarly, there is a place very much famous in Uttar Pradesh for sports goods. Some place. What is that place? I don't know. Is it Meerut? Yeah, Meerut. Meerut is known for what? Um, the sports goods. Similarly, there is Kanpur is known for what? Leather goods. Likewise, आप अपना जगह का बारे में प्रिपेयर कर दीजिए, आपका स्टेट का बारे में प्रिपेयर कर दीजिए, पूरा जान पहचान होना है आपका पास में, वे फुल फुल डिटेल्स आपको पता होना है. इसका बाद में आपको resume based questions. Why you chose this subject? Civil engineering, mechanical engineering, biotechnology क्यों चूज किया है? उसका बाद में why do you want to come to RRB? इसमें फेवरेट आंसर है तो सबको जानते हैं, बैंकिंग इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री and it offers challenge for growth, career growth and also opportunities. मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, इसी वजह से हम आरआरबी में ज्वाइन करना चाहते हैं. बट ऑफ कोर्स आरआरबी में आपको ज्यादा प्रमोशन नहीं है, बट अभी दूसरा आईबीपीएस आईबीपीएस पीओ में तो आपको कंपटीशन ज्यादा होगा. इसका अलावा आरआरबी इज बेटर. एंड उसमें क्या फर्क है, एडवांटेज है, आप अपना स्टेट का अंदर में काम कर सकते हैं. यू कैन वर्क विद इन యువర్ స్టేట్. సో దట్ అది మీకు మంచిది. మీ స్టేట్ లో లోపల పని చేయవచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పని చేయవచ్చు, లేదంటే తెలంగాణలో పని చేయవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇస్ హ్యావ్ యూ అపియర్డ్ ఫర్ ఎనీ बैंक इंटरव्यूज? अर्लियर प्रीवियस इंटरव्यूज कुछ अटेंड किया है आप? उसका बारे में कुछ नहीं होगा तो कोई तकलीफ नहीं है. Then what are the strengths that you have that will help you are fitting into the role of RRBAM? इसमें आप क्वेश्चन ये है, आपको क्यों ये सेम आंसर आएगा आपको क्यों सेलेक्ट करना है, आपको क्यों ये नौकरी देना है, आपका पास क्या स्ट्रेंथ है, ये सबको एक ही आंसर आएगा. Then is there any person relative working in RRB in other banks? Is there any person or relative working in other banks? Yeah. Rakesh, tell Ramdev sir what to say banking after mechanical engineering. Yes, you can see there is a link I have provided in my yesbank.in. Why banking after engineering? उसको आप पढ़ने से तो आपको पता हो जाएगा. You can get to know that, and then if you want detailed answers, पक्का discussions, then आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम लोग इंटरव्यू के लिए क्लास कंडक्ट करेंगे. तब ज्यादा क्वेश्चंस ऐसा भी सब हम लोग डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं. या about your degree basic questions, if you know answer immediately, otherwise say you studied long back and do not remember them and you have been preparing on banking subjects, ऐसा बोल दीजिए. क्योंकि आप you should not guess answers. You could I mean, when you say that you don't know your subject, you at least tell them that you know banking subjects. Say if you want to know which group you should join, yeah, I will tell you. See, you have to WhatsApp 80. You have to WhatsApp 8072177482, and after paying rupees 301 rupee to GPAY or phone pay, number is 90030375557. 90030375557. You will send it to me.
you please send the payment screenshot भेजना है. You have to send screenshot. Then दूसरा पॉइंट ये है, हम तो दिया है आपको, 1 मिनट टेरिए लाइन में हम आपको बोल देगा. IBPS RRB इंटरव्यू गाइडेंस नोटिस इसमें दिया ना, हम तो हर समय पर आपको दे देता है. इसका बाद में क्या करना है, आप एक फॉर्म फिलअप भरना है. आप एक फॉर्म फिलअप भरना है. वो फॉर्म फिलअप करने से तो आपको ईमेल आईडी मेरे पास आ जाएगा. जब क्लासेस कंडक्ट होगा तब आपको बोल देगा. Then you can come to the classes, but not people are, so far also 3-4 people are paid, but nobody is coming for the class. Nobody is coming for the class. आप क्लास आने से तो हम कंडक्ट कर सकते हैं. इसका अलावा आपने एक जॉइन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है. ये दूसरा टेलीग्राम ग्रुप, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए. आफ्टर मेकिंग पेमेंट एंड सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए. जब आप ज्वाइन करेंगे इसका बाद में हमने क्या करेगा, आपको मटेरियल्स भेजेगा. आई विल सेंड यू द मटेरियल्स. I will send you the materials for you to prepare for the interview. Then uska baad mein, then after you are preparing for the interview, then I will conduct mock interview for you. सबको एक mock interview हम free करेगा. लेकिन बाद में जब जो अगला इंटरव्यू चाहते हैं, कई कई कैंडिडेट्स 2-3 इंटरव्यू लेते हैं, उनके लिए तो हम सेपरेटली, अनएम्प्लॉयड होगा तो 100 रुपया मांगेगा, एम्प्लॉयड होगा तो 200 रुपीज जमा देना पड़ेगा. इसका बाद में आप ऐसा में भी आप पैसा जमा देने से तो आप मेरा क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. आप लोग इवन एक आदमी आने से भी हम क्लास कंडक्ट करेगा 8 o'clock और सो. और अभी देखिए आज भी हम फेडरल बैंक के लिए कुछ क्लास कंडक्ट किया था, खाली एक ही आदमी आए थे. बट आप लोग आने से तो हम कंडक्ट कर सकते हैं. सो इसीलिए है. बट प्रॉब्लम हम जानते हैं, अभी आपको मन में क्लियर नहीं है, आपको RRB क्लियर होगा नहीं होगा, ये आपको डाउट होगा. जब आपको डाउट नहीं है तब जमा कर सकते हैं, आप आ सकते हैं. हम आपको इंटरव्यू का बारे में आपसे बात करेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे, तब आपको सुविधा हो जाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर कॉलेज. आपको कॉलेज का सम बढ़िया कॉलेज, अच्छा कॉलेज होगा तो उसका बारे में क्वेश्चन आएगा. ऐसा मत ही आपका नाम पर भी क्वेश्चन आएगा. आपका नेम पर वी आर द फेमस पीपल, ऐसा में भी क्वेश्चन आएगा. देन आपको अचीवमेंट्स क्या है, कॉलेज में आपने क्या अच्छा किया है, अचीवमेंट्स कुछ किया है. ये सब क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछने का रीजन ఇది ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే the interviewers must have a feeling that you are feeling good about yourself. But it is also true, after 2-3-4 years trying for jobs not getting, you may feel bad, but do not feel bad about it. Feel confident and you appear for the interview with confidence. There are a lot of cases where people have been selected after not being working for 3-4 years also. So be confident. So you tell certain things like, say, I was a leader of some group, or I was participating in NCC or NSS, something कुछ ना कुछ आप देना पड़ेगा, बोलना है. Some more questions, regular questions, सब इंटरव्यू में ये होता है. Banking definition, deposit schemes offered by RRB. What are the formalities to be complied with opening of accounts?
KYC and other documents like memorandum and articles of association, certificate of incorporation in the case of limited companies. What are the various services rendered by RRBs? Lockers, non-resident Indians accounts, digital banking, बैंक assurance, ये सब आप बोल सकते हैं. इसका बारे में what are the types of loans given by RRB like agriculture, KCC, term loans, education loan, housing loan, SHG loan, MSME loans, export loan, infrastructure, renewable energy, startups. But maybe आपको RRB में स्टार्टअप ये सब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सब बड़ा लोन्स नहीं होगा. बट हमने ये सब पॉइंट क्यों दिया है? आपको प्रायोरिटी सेक्टर का बारे में मालूम होना बढ़िया है, इसलिए ये पॉइंट दिया है. देन प्रधानमंत्री जन धन योजना का बारे में जानना है. मैक्सिमम डिपॉजिट क्या है, इंश्योरेंस कवरेज क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम क्या है, what are the uses of computers in banking, how digital banking has helped banks and customers, what do you think will be the position of banking in India 20 years from now, what are the improvements, what is financial inclusion, what, why, how, whatever it is. Then commerce students के लिए double entry bookkeeping golden rules. 3 golden rules: debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses, credit all incomes and gains, P&L account, opening stock, closing stock, variable expenses, fixed expenses, assets and liabilities, balance sheet. Why is capital shown in liabilities? That there can be questions on GST, excise duty. Then sometimes there can be questions on now. Recently, they are levying some special tax on windfall tax, some exports of petroleum and all. Debit card, credit card details, differences, difference between NBFC, RRBs, Companies Act 56, 2013, agricultural schemes by government, PM Kisan Samman Nidhi, Krishi Sinchai Yojana, etc. NPA causes क्या है, how to reduce, surface का बारे में पढ़ना है, IBC का बारे में पढ़ना है. हम आपको मटेरियल्स देगा, आपको मटेरियल्स दे देगा, उसमें आपको ये सब डिटेल्स कवर हो जाएगा. Then problems faced by banking industry, RRBs and the economy. What can you do to RRB? What other candidates cannot do? Details about priority sector, housing, education loan, infrastructure, agriculture, etc. Latest newspaper, news channel, reports in the last 2 or 3 days. Because हम सब बात बच्चों लोग को बोल के भेज देते हैं, लेकिन उधर जाने से तो वो लोग उसी दिन का न्यूज़ पूछ रहे हैं. इसीलिए आप ऐसा में भी पूरा तैयार होने से अच्छा होगा. जब आपको then if you are getting prepared, that will be good. I expect a good number of students to join for the classes because हमारा फेडरल बैंक इंटरव्यू में तो 140 कैंडिडेट्स था और कर्नाटका बैंक में हमारा पास 300 कैंडिडेट्स ज्वाइन किए थे. उन लोग को सब, बट यही प्रॉब्लम है. इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैंडिडेट्स रोज क्लास नहीं अटेंड कर रहे. यही प्रॉब्लम है. जब आप क्लासेस शुरू होगा तब आपको जो क्लासेस अभी तक कंडक्ट हो गया है उसका वीडियो सब आपको भेज देंगे. So this is what it is.
So I would like to stop with this. If you have any questions to ask, you can put it here. You can put it here, and so that I can answer that also. Thank you so much. आप जानते हैं अभी हम कनाडा में रहते हैं, इसीलिए हमारा शाम को क्लास लेना अच्छा है। मतलब 5 नॉर्मली हम लेंगे 5 o'clock इवनिंग से, नहीं होने से 6 o'clock इवनिंग से शाम को 10:30 बजे तक क्लास लेंगे और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। हाँ, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या है, कैंडिडेट्स आप पूरा पढ़ने का बाद में इंटरव्यू ले सकते हैं। इसी वजह से तो आपको एक साथ में अपनी जमा देते हैं, जिसको यूज करके आप इन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो क्लासेस ऑफ क्लास तो 90% आपको इंटरव्यू तक होगा जी। जब आपको इंटरव्यू चलता है तब होगा, क्योंकि इंटरव्यू शुरू होने का बाद में भी होगा। After the interview starts also, my classes will be there, because the candidates who are attending interviews will be giving me the questions. I will use them and discuss with you. So mostly it will be there till the interviews are there. That should not be any problem. This is what it is. Any questions you would like to ask? Rakesh has asked. That's what I told him. How many days? Abhi, I can start even from. I already started. कुछ classes conduct किया था about 3-4 days back, but बाद में लोग आता ही नहीं है, इसलिए क्लास अटेंड नहीं किया है। अभी इस बात को भी हम क्लासेस का अंदर में डाल देते हैं, क्योंकि नया स्टूडेंट्स कोई ज्वाइन करने से तो उनको ये सब इंफॉर्मेशन मिलने से बढ़िया होगा। आप जमा देने से तो ये एक लिंक देंगे, ये लिंक में आपको ये सब मटेरियल मिल जाएगा, और इसका पढ़ने का बाद में हम आपसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, या बाय।